Hello everyone, in this video we will talk about how to prepare for NATA in the last 2 months. So basically NATA ka exam contains 6 major sections: design aptitude, basically design principle per based questions, verbal reasoning, verbal ability, numerical ability and a quantitative aptitude, general awareness, general science, current affairs, and then finally non-verbal reasoning based questions. Putting first thing first, design concepts per based questions या design principle per based questions are asked, and majorly इससे approximately somewhere around 40 to 50 questions are asked, and they revolve around the design principles, designs के basics, design के अलग-अलग concepts. So a student is advised to go through all the principles of design, and if you're good at that, your chances of scoring well in this particular section are comparatively higher. Well, talking about the 3 major parts which are related to pure aptitude, which is numerical aptitude and quantitative aptitude, reasoning, verbal reasoning, which is also known as logical reasoning, and another thing which is non-verbal reasoning, which uses the concept of visualization, imagination. So numerical abilities like आपके 10th standard तक का mathematics, quantitative aptitude, numbers, percentages, ratios, proportion, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क इन टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एवरेज, इस तरह के बेसिक्स क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस आर आस्क्ड अंडर दिस टॉपिक न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब लॉजिकल रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग की बात आती है, इन दिस क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस, पजल्स, रिडल्स, डिफरेंट वर्ड से रिलेटेड रिडल्स, डायरेक्शन सीन्स पर बेस्ड क्वेश्चंस, a lot of various questions where you need to use your brain, where your logical skills are assessed. इस तरह के questions are asked in verbal reasoning, blood relations, etc. When it comes to talking about non-verbal reasoning based questions, तो इसमें simple से questions होंगे जैसे mirror image, water image, finding out the difference, sequence या series का अगला pattern क्या होगा. So patterns recognition, visualization, विजुअल्स को रिकग्नाइज करना, विजुअल्स को इमेजिन कर पाना, इमेजेस के थ्रू चीज़ें इंटरप्रेट कर पाना कम अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. वेल, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज़ नोन एज वर्बल एबिलिटी, विच इज़ नथिंग बट इंग्लिश. तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 5 पैसेजेस आर आस्क्ड, और हर पैसेज में देयर आर 5 क्वेश्चंस. सो इन शॉर्ट यू नीड टू वर्क अ लॉट अपॉन इंग्लिश एज वेल. For that, I would always recommend go through newspapers, go through some good books, keep reading. As much as you read, your comprehension skills will improve. They basically want to check आपकी interpretation skills कैसी हैं. आपको अगर कुछ चीज़ें पढ़ने को या समझने को दी जाएं, how will you comprehend? That is basically being assessed in this particular or through this particular section. Now talking about one more section, which is जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स या आर्किटेक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे मॉन्यूमेंट्स के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, आर्किटेक्चर से रिलेटेड अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, अलग अलग बिल्डिंग्स. सो इस तरह की इंफॉर्मेशन इज आस्क्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जनरल अवेयरनेस. अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कुछ फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस. सो दिस इज हाउ इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड. फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आई वुड रिकमेंड आप कोई सी भी एक बुक के थ्रू प्रैक्टिस करिए, और अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट. यू प्रैक्टिस द बेसिक क्वेश्चंस, यू कैन एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. फॉर लॉजिकल रीजनिंग, अगेन आई वुड रिकमेंड द बेसिक बुकलेट्स, basic material, whichever you can get from anywhere. The basic moderate level of questions are sufficient to work upon your logical reasoning skills. For English, as we have already discussed, read as much as you can from whichever source you like. Whatever you enjoy reading, go through that. You'll definitely hone your reading comprehension skills. Apart from that, when it comes to visualization, imagination, non-verbal reasoning wala part, I would recommend that solving a good material from any site is okay. Just go through it. Just ensure that you are reading or going through something relevant. I would recommend जब भी आप नॉन वर्बल रीजनिंग सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, सो यूसीड के कुछ पेपर सॉल्व करिए. बेसिकली नाटा का अब जो पेपर आता है स्पेसिफिकली नॉन वर्बल रीजनिंग सेक्शन, वो यूसीड के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है. तो यूसीड या सीड जो आईआईटीज कंडक्ट करवाते हैं डिज़ाइन कोर्स में एडमिशन के लिए, उसका जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है, दैट पेपर विल गिव यू मोर आइडिया कि अब नाटा अपने नॉन वर्बल रीजनिंग सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन रखता है. Apart from that, when it comes to general awareness, GK and current affairs, again read a lot of newspaper, current affairs updated रहेंगे, क्योंकि आपके डोमेन के अलावा स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन अलग अलग डोमेन से, इन अलग अलग सेक्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो कीप एन आई ऑन ऑल दीज करंट हैपनिंग्स अराउंड. अपार्ट फ्रॉम दैट,
General awareness, basically or majorly something around architecture. Read a lot. The more you read, the chances of you scoring well in this exam will be higher. So that's all about NATA's preparation in the last 2 months. I hope that helps. Thank you.